I hope आप लोग अच्छे हो, मजे में हो, and you people are reading. In this question, we are really going to learn something different, something interesting, and something that will make our task easier, I would say. So let's focus on the question. Force acting on a particle in two-dimensional XY space is given. So force as a function of coordinate variable is given. So that force is conservative. Done. How we will show it? I mean, we know what is conservative force. Force which when does work, then that work done doesn't depend on the path taken, rather on the initial and the final position, right? But how to prove if equation of force is given, then if this is conservative or not? So for that, we will use one mathematical identity. I will tell you how to use that, and I will make it more simpler for you so that it will make your task more convenient, I would say. So let's start with it. For this, we will take one help of one mathematical identity, और वो identity ये कहता है curl of any gradient is always the zero vector. Zero vector से आप acquainted हो, आपको पता है जीरो वेक्टर क्या होता है, ग्रेडियंट भी आपको पता है. कंजर्वेटिव फोर्स में आपने क्या देखा था, कंजर्वेटिव फोर्स वाज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो माइनस वन बाई dy dx of u in the I cap direction plus dy dy of u in j cap direction plus dy dz of u in k cap direction. So when we were calculating dy dx of u, we were treating y and z as constant, then we were doing this differentiation. And here we were treating x and z as constant, then we were doing this. And here x and y as constant, then we were differentiating u with respect to z. So if you look at conservative force, then conservative force is actually a gradient, done है? And this is gradient of potential energy. And mathematical identity क्या कहता है कि curl of any gradient is always the zero vector. So अगर force conservative है और उसका अगर आप curl निकालते हो, so that should be zero. So what you have to do is to check if force is conservative or not. You have to calculate curl, and if curl is zero, I mean force is conservative. अब आप सोच रहे हो कि मैम ये कर्ल क्या होता है. कर्ल कुछ नहीं है, आप देखो ये सिंपल. अगर फोर्स का कर्ल निकालना है ना, सिंपल, दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट, आई वुड से. सो आप कुछ ऐसा देख लो, यहाँ पे आप लिखोगे आई कैप लिख लो, कर्ल ऑफ फोर्स मैं निकाल रही हूँ. ठीक है, फोर्स का क्या होगा, सपोज कर लो इट हैज थ्री कंपोनेंट्स. हियर यू कैन सी इट विल हैव एफ एक्स कंपोनेंट, एफ वाई एंड एफ जेड. ठीक है, सो फर्स्ट रो में आप आई कैप लिख लो, सॉरी जे कैप लिख लो, देन के कैप लिख लो. ठीक है, बिलो आई कैप यू राइट डी बाई डी एक्स. ठीक है, एंड बिलो जे कैप यू राइट वॉट, डी बाई dx है ये, dy dy, एंड बिलो k कैप यू राइट dy dz. ठीक है, उसके बाद dy dx के पास बिलो आप लिखो क्या, x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स fx, यहाँ पे y कंपोनेंट एंड यहाँ पे z कंपोनेंट. सो बिलो i कैप यू हैव टू राइट all the x thing, below j cap all the y thing, below k cap all the z thing. So this is curl of f, and if this comes out to be zero, you will say that force given in the question is actually a conservative force. अब देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करो, चलो इसको हम निकाल कर देखते हैं. सो आई कैप जब आप सॉल्व करते हो ना, while I mean what will be the value of I cap, curl is nothing but cross product, sort of gradient and force component, right? So this is basically cross product of dy dx, dy dr vector and force vector, right? So this is this. अब देखो आई कैप कंपोनेंट इसका क्या होगा, सो फॉर दैट you will cancel row passing through I and column passing through I. So you will cancel this and then you will do the cross multiplication. अब आप इसको कर दो. So if you do, you will write dy, देखो इस ये y है, ठीक है. So dy dy of fz minus dy dz of fy. Now for second column, first we give negative sign, that is rule of determinant, and here j cap आप लिखो. And for j cap, what rule, which thing you're going to cancel and which thing you're going to cross multiply. So यहाँ पे आप क्या करोगे, just give me some time. Okay, so this was dy, right? ये dy है तुम्हारा, डन है. जे कैप के लिए आप क्या करोगे, सो वट एवर रो इज पासिंग थ्रू j cap, cancel that, so this one you will cancel, and then column passing through it you will cancel, so this one you will cancel, then cross multiply. So dy dx, dy dx of what you will be writing, dy dx of fz minus dy dz of fx.
So this is what we are going to get plus k cap. K cap के term में क्या मिलेगा हमें? So for calculating k cap, again cancel this column and then cancel this row. So you are left with this. ठीक है? So you will be writing dy dx of fy minus dy dy of fx. ठीक है? This is your fy. And this should be equal to 0. So for this curl to be equal to 0, component of I should be 0, component of j should be 0, component of k should be 0. All individually should be 0, right? So अगर आपने इसको 0 करना है ना, इसको, तो क्या होना चाहिए? True. dfz by dy should be equal to dfy by dz. सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बताओ? dfz by dx should be equal to dfxy dz. Again this is x, okay, and according to here dfy by dx should be equal to dfx by dy. So all these three conditions should be true if our force is conservative. Done it? Now let's use this thing in our equation. Whatever force is given, हमें force का दो ही component दिया है, right? सो हमें एफ एक्स दिया है, एफ वाई दिया है. सो फॉर दिस इफ वी कैलकुलेट कर्ल, हमारा कर्ल कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है क्योंकि ओनली टू कंपोनेंट्स आर देयर. सो आई जे के, बट अगेन वी नीड टू राइट ऑल दिस थ्री, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी वाई एंड डी वाई डी जेड. So you will be writing what? fx, fy and this is 0. So if you do, देखो i cap जब आप निकालोगे ना, so in that case you will be getting what? 0. क्यों? I cap का component already 0 आएगा because you will cut this, you will cut this, you will multiply this, that will become 0 and then you will multiply this. ठीक है? So that is equal to how much? d of fy by dz. So d of fy by dz क्या होगा? 0. Because in fy if you see there is no z thing, right? So for while differentiating with z, we treat x and y as constant. So whole will become constant because there is no z term here. So this will be 0. So I cap का कोई component नहीं है. Similarly j cap का कुछ भी नहीं दिखेगा. K cap के लिए you will be getting what? dy dx of what? dy dx of fy minus dy dy of fx. एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0. सो सिंपल मैं फॉर्मूला में जाती हूँ. देखो अगर तुम्हें फोर्स ओनली एक्स एंड वाई का फंक्शन दिया है, यूज दिस. These two should be equal. If force is given only as a function of z and x, use this. If force is given only as a function of z and y, use this. And if force is given as a function of x, y, z, all these three you need to do. Question may vary in that case. Okay. So हमें यहाँ पे simple ये use करना था क्योंकि force is given as a function of x and y. So let's use this thing. अगर मैंने इसको use किया ना, तो आप इसको differentiate करो. Differentiate dfx with dy. So if you do that, fx का value क्या है बताओ? fx is your 3x into x square plus y square का power minus 3 by 2. So if you go on to differentiate it with respect to y, x thing will act as a constant, so 3x will come out, x will act as a constant, right? अंदर क्या बच जाएगा? x square plus y square minus 3 by 2. If you differentiate it, how much value you are going to get? So this will give you 3x into minus 3 by 2 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का पावर माइनस 5/2 into that is your 2y. Because you are differentiating x square plus y square with respect to y, so I mean 2y का फैक्टर आएगा. if you are confused then I can let you know. यहाँ पे जैसे देखो इसके डिफरेंशिएशन को मैंने कैसे किया. dx square plus y square का पावर -3/2 है. you need to do this thing x square plus y square into dx square plus y square divided by dy square, sorry dy. ठीक है. सो इसका आंसर तुम्हारा क्या आया? इसका आंसर आया ये वाला टर्म एंड इसका आंसर क्या आया? 2y. सो ओवरऑल दिस विल बी द आंसर. सो आंसर क्या दिख रहा है हमें? आंसर दिख रहा है माइनस दिस 3 को मैंने कैंसिल कैसे कर दिया? 3 कैंसिल नहीं होगा. 3x इंटू माइनस 3y, x 2 कैंसिल होगा. सो ओवरऑल माइनस 9xy. डी एफ एक्स बाई डी वाई क्या आया? ओवरऑल माइनस 9xy इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का पावर -5/2. अब सिमिलरली आप क्या निकाल लो? आप निकाल लो डी एफ वाई बाई डी एक्स. सो इफ यू डू दैट, एफ वाई का वैल्यू क्या है? That is your equal to y
3y, so 3y को आप बाहर ले लो, and then you will be getting x square plus y square का power minus 3 by 2. Again you will be getting same thing, it seems like 3y into this will become how much, minus 3 by 2 x square plus y square का power minus 5 by 2, and then 2x will be left here. ठीक है, so again 2 will get cancelled and you will be getting minus 9xy x square plus y square का power minus 5 by 2. So these two are equal, and if these two are equal, it means the force given in our question is a conservative force. Done? So I hope you have understood how to identify force is conservative or non-conservative, right? If this holds true, then conservative. If not, then it is non-conservative. Okay. So I hope you have understood. Even if not, somewhere you got stuck, you can always let me know in the comment section. Thank you.